Hello everyone. In today's class, we're going to talk about the use of prepositions. Along with that, we'll be discussing some of the essential and important rules. And along with that, we'll also be highlighting some of the common mistakes that most of the students make. So, my name is Akif Nawaz, and I welcome you all to this new video on prepositions. So, now let's talk about the definition that what actually preposition is. So, it is a word or a phrase that shows the relationship between a noun or pronoun and other elements in a sentence. So हमें पता है कि एक सेंटेंस में हमारे पास नाउन्स भी होते हैं, वर्ब्स भी होते हैं और एंड पे भी हमारे पास एक नाउन होता है. सो हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो हमारे पास इन तमाम वर्ड्स का आपस में रिलेशनशिप का तयन करता है. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज preposition. It often indicates direction, time, location or introduces an object. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्शन का, वक्त का, लोकेशन का और नए ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट्स द की स्ट्रक्चर? Prepositions must always be followed by a noun or pronoun that is usually called as the object of preposition. तो हम कह सकते हैं कि वो preposition जो हमारे पास ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ होते हो उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ preposition कहते हैं. और ये हमारे पास हमेशा ही नाउन्स और प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है. और अगर ये वर्ब के पहले यूज़ हो तो इसका मतलब है इट इज़ यूज्ड इनकरेक्टली. एग्जाम्पल से आप देखें, ही सैट ऑन द चेयर. नाउ चेयर इज़ अ नाउन हेयर, इट्स एन ऑब्जेक्ट. अब ऑन जो है वो इससे पहले यूज़ हुआ है. सो हम कह सकते हैं कि इट्स द ऑब्जेक्ट, इट्स द preposition ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, और ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. और सैट हमारे पास वर्ब है. सो prepositions are not used before verbs, rather they are used before objects, जो कि possibly हमारे पास nouns होते हैं या pronouns होते हैं. The next one is she arrived at 6 p.m. अब यहाँ पर आप देखें at जो है that is used before this word 6 p.m. So हम कह सकते हैं कि preposition हमारे पास relationship show करते हैं. आप एक पहले एग्जांपल में देखें the relationship between sat and chair. The next one is relationship between arrived एंड टाइम. सो सिंपली prepositions हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसमें हम कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करते हैं कि कहाँ पर हम इसको करेक्टली हमें यूज़ करना चाहिए. द फर्स्ट वन रूल इज़ preposition must have an object. मीन्स कि जो preposition हम लगाते हैं उसके बाद का होना, ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है. A preposition must have an object, जो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा. Without an object, the word is likely functioning as an adverb, not a preposition. अगर हमारे पास एक preposition के आगे ऑब्जेक्ट है, so that would be called as a preposition. लेकिन अगर हमारे पास एक preposition के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, so most likely probability है, possibility है कि वो हमारे पास adverb होगा. अब यहाँ पर आप देखें, he is in the kitchen. Kitchen here is a noun, that is an object. अब in is used before that, so it's a preposition. There was a car before me or after me. So हम कह सकते हैं कि it is before an object, that is me. So simply हम कह सकते हैं कि these are prepositions. लेकिन एक और हमारे पास केस आ जाता है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो. यहाँ पर आप देखें, you may come in. Now this in usually ये तो preposition होता है. ठीक है. बट यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एन एडवर्ब. ही अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर. सो हम कह सकते हैं कि दिस इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ड आफ्टर हेयर, सो दैट्स वाई इट वर्क्स एज एन एडवर्ब नॉट एज अ preposition. सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. prepositions are placed before their objects. ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि are called prepositions, right? Because they generally come before a noun or a pronoun. I put the book on the table. Now on is a preposition, the table is an object. The cat jumped under the bed. Under is a preposition, bed is object used after it. Prepositions at the end of sentences. कुछ prepositions ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास सेंटेंस के एंड में होते हैं
और हमने कहा था कि एंड पे जब ऑब्जेक्ट ना हो तो ये एडवर्ब के तौर पे काम करते हैं, बट यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नाउ फॉर इज यूज्ड एज in the end, but simply we need to know that this is an interrogative sentence. Interrogative sentence means that in this sentence a question is asked. So ये हमारे पास एक और नया केस आ गया है कि अगर preposition question type में end पे use हो तो it's acceptable in modern English. Whom did you talk to? So ये हमारे पास they perform the function of prepositions. The next one is pronouns following prepositions must be in the objective form. Means के वो pronouns जो के preposition के बाद आ रहे हो. So वो prepositions objective form में होंगे. एक subjective form होगा, दूसरा objective form होता है. ठीक है, ये pronouns में मैं already discuss कर चुका हूँ. So if you have any problems you need to visit and watch that video again, right? So when a pronoun allows a preposition, it should follows a preposition, it should be in its objective form like me, him, her, them, us. अब इसके subjective form क्या है? I is a subjective form of me, he is a subjective form of him, she is a subjective form of her, they is a subjective form of them, and we is a subjective form of us. Not in its subjective form. Look, these are written just in front of you, right? Now the gift was from me. Now from here is a preposition, एंड इसके बाद हमारे पास एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. अगर हम इसको रिप्लेस करें सब्जेक्टिव फॉर्म से, सो दिस सेंटेंस वुड बी लाइक दिस: द गिफ्ट वॉज फ्रॉम दे. इट डजंट मेक सेंस, राइट? सो इट वुड बी incorrect. The conversation in between him and her, both are in the objective form. अगर हम कहें the gift was from they, it's incorrect because we've discussed that whenever a pronoun is followed by a preposition, it must be in its objective form. I hope it's clear, right? Let's move on. The next one is avoid using like when a verb follows. Means the preposition like is used to mean similar to and must be followed by a noun, pronoun, or a noun phrase, not a verb. Use as or as if a verb follows. Means कि अगर हमारे पास verb end में आ जाता है, so और हमने क्या करना है, हम यूज़ कर रहे हैं like को, so हमने इसको नहीं यूज़ करना जब verb इसके आगे हम यूज़ करते हैं. Why? Let's understand it from example. For example, if I say that she looks like her mother. Now this preposition is followed by this verb is followed by a preposition like looks like her mother. So noun mother follows. Now the noun हमारे पास यहाँ पर है, that is mother, and it is preceded by, इससे पहले हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को, like को यूज़ करते हैं. ठीक है. Now this is the correct form. अब incorrect form में अगर हम कहें कि she looks like her mother does. Now here we need to avoid using like with a verb. Why? Because mother के बाद हम एक verb लगाते हैं, that is does. So जब भी हमारे पास हम like को use करते हैं, so we are not supposed to use verb after that. अब इसके correct version को आप देखें. अगर हमारे पास इस तरह का sentence हो, so instead of like we need to use as. She looks as her mother does. So आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि जब भी हमारे पास एक वर्ब एंड में आता है, जिस तरह डज यहाँ पर हमारे पास आता है, सो हमने लाइक के बजाय एज को यूज़ करना है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यूज़ एज इफ और एज दो फॉर कंपेरिजन्स विद वर्ब्स. जब हम वर्ब्स के दरमियान कंपेरिजन्स करते हैं, सो हमने as if or as though को use करना है. When comparing actions or states involving a subject and verb, use as if or as though instead of like. तो like की जगह हमने ये वाले prepositions use करने हैं हमें, और ये compound prepositions है. ठीक है. Now examples को आप देखें. Do it like he says. Now यहाँ पर आप देखें we have two verbs, do and says. तो जब हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को करते हैं, सो हमने क्या करना है, हमने like को यूज़ नहीं करना. वाई? बिकॉज करेक्ट वर्जन में आप देखें डू इट एज ही सेज, यहाँ पर दो वर्ब्स है, सो हमने एज का इस्तेमाल करना है. ठीक है. नेक्स्ट वन आप देखें
शी स्पीक्स लाइक शी नोज एवरीथिंग. अब यहाँ पर आप देखिए स्पीक्स एंड नोज, दे आर टू वर्ड्स एंड वी आर मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन. सो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं एंड व्हेन टू वर्ब्स आर इन्वॉल्वड इन इट, सो वी डोंट यूज लाइक. इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू आइदर यूज एज इफ, आर एज दो. सो करेक्ट वर्जन को आप देखें, शी स्पीक्स एज इफ शी नोज everything. So this is the correct version. The next one is use like for nouns and as for verbs. जब भी हमारे पास nouns को के बारे में हम कोई relationship show करते हैं, हमने like यूज़ करना है. और अगर verbs के दरमियान show करना है तो हमने as यूज़ करना है. Use like for nouns and pronouns when no verb follows. Use as for verbs. For example, I, like most people, try to improve my English. अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने like को यूज़ किया है, ठीक है, बिकॉज आई इज़ अ प्रोनाउन एंड इंग्लिश अगेन इज़ अ नाउन, और पीपल भी हमारे पास नाउन है. तो जब भी हम नाउन्स के दरमियान कोई कंपैरिजन बनाते हैं या नाउन्स हमारे पास एक कनेक्शन शो करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं, तो हमने लाइक को यूज़ करना है. अब इसके अगेंस्ट अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, आई एज मोस्ट पीपल डू. अब यहाँ पर आप देखें जो आपको कॉमर्स में नज़र आ रहा है, एज मोस्ट पीपल डू. वाई डू वी यूज़ एज? बिकॉज देर इज़ अ वर्ब इन्वॉल्व इन इट, और वो वर्ब कौन सा है, डू. सो दैट्स वाई जब भी वर्ब हमारे पास यूज़ हुआ हो वाइल मेकिंग कंपैरिजन, तो हमने एज यूज़ करना है. और ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, लाइक मोस्ट पीपल, सो पीपल इज़ अ नाउन, सो तब हमने लाइक का यूज़ करना है, ठीक है. अब इनकरेक्ट को आप देखें, अगर मैं कहूँ आई एज मोस्ट पीपल try to improve my English. Now this is without a verb, so that's why there's no verb after people, right? So that's why this as would have been used here as incorrect, right? Let's move on to the next one. Do not confuse preposition to with infinitive to. अब infinitive to क्या है, let's talk about it. Infinitive पे भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है. Just go to YouTube, write down my name, and along with that write infinitives. So आपको एक वीडियो सामने आ जाएगी and that will help you out in understanding infinitives. Let's move on with this rule, right? The word to can be used as prepositions. To plus noun or pronoun are as part of an infinitive verb. Do not confuse the two. अब ये जहाँ पर आप देखें, जो to है वो हमारे पास prepositions एज अ preposition भी यूज़ होता है, और sometimes हमारे पास infinitive यूज़ होता है. अब इन दोनों को हमने कंफ्यूज नहीं करना. लेट्स अंडरस्टैंड. अब प्रपोजिशंस हमारे पास तब यूज़ हुआ होता है जब इसके आगे नाउन होता है, ठीक है. आई एम यूज टू स्विमिंग. नाउ स्विम यूजुअली इज़ अ वर्ब, बट हियर इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन, as an activity, as the name of something, right? So that's why we can say that swimming here is a verb, a noun actually. So when verbs are used as nouns, they are called as gerunds. So यहाँ पर swimming जो है वो gerund use हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि this too is not a preposition, rather it's an infinitive, right? Next, sorry, it is a preposition because swimming is a noun. Now she gave the book to him. अब यहाँ पर आप देखिए him is a preposition. Preposition usually replace करता है किस चीज़ को, noun को. तो वो preposition जो हमारे पास noun और pronoun से पहले यूज़ होता है, that is considered as preposition. But कुछ हमारे पास है जो कि as infinitive यूज़ होते हैं. जिस तरह इस एग्जाम्पल में देखें, they love to dance, right? To dance is an infinitive. Why? Because it is followed by a verb. Now dance यहाँ पर क्या है, it is used as a verb. अब it is not actually a verb, it's an infinitive, but that is a lengthy debate. So इसको समझने के लिए आप infinitive की वीडियो को देखें. I would make sure कि आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए, ठीक है. They love to dance. Now this too is not a preposition. Why? Because it is used with the infinitive, right? So to dance here is an infinitive. The next one is I used to live in Australia, right? So to live, again this live is a verb, is the base form of the verb, and it is preceded by to. So this too is not a preposition, rather it's an infinitive, right? The next one is verbs following prepositions. Some verbs may follow a preposition, but they are often gerunds or infinitives, not actual verbs performing an action. जिस तरह इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कुछ verbs से पहले ये यूज़ होते हैं, but वो actual में verbs नहीं होते.
या तो वो जेरेंड्स होते हैं या इन्फिनेटिव्स होते हैं, ठीक है। अब जेरेंड्स क्या है, इन्फिनेटिव्स क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है, मैंने तमाम के ऊपर वीडियोस बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक आपका सारों का मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एग्जांपल आप देखिए, आई लाइक टू स्विम। नाउ स्विम here seems as a verb, but it is not actually a verb. Why? Because it's an infinitive. Why it's infinitive? Because it is a verb that performs the function of a noun. Detail के लिए आप go to the description, right? These goggles are for swimming. Now it's gerund swimming function as a noun. So that's why we can say that this for and to, these are not prepositions. Rather, they are infinitives, right? The next one is difference between the use of in and into. So use in to indicate location and into to express motion towards something. जब हमने location के बारे में बात करनी है तो हमने in use करना है. She is in the room. So where is she? In the room. Now I am actually talking about her location, right? The book is in the bag. Where is my book? The book is in the bag. So I am actually talking about the location, right? The next one is into. Whenever there is a kind of movement, right? Like the cat jumped into the box. Now this shows movement. So whenever there is this notion of motion or movement, we have to use into, right? He drove into the city. Now again there is this notion of movement. So into would be the correct preposition, right? So the difference between the use of in and into, I hope it's clear now. So now let's conclude the overall discussion on prepositions. So prepositions play a crucial role in understanding relationship between words in a sentence, because a sentence is made up of words, और उन words के दरमियान जो हमारे पास relationship को show कर दे, there are prepositions. Mastering preposition rules helps avoid grammatical errors and improves both spoken and written English. अगर आप preposition को गलत यूज़ करें तो आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, सो मैं लोकेशन सही बता रहा हूँ, बट इफ आई से दैट द बुक इज़ अंडर द टेबल, सो दिस वन ऑन एंड अंडर एक्चुअली दे हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द मीनिंग. सो ना सिर्फ ये आपके मीनिंग को हैम्पर करता है बल्कि आपकी फ्लुएंसी को भी इम्प्रूव करता है अगर आप इसको करेक्ट यूज़ करें. इंपॉर्टेंट रूल्स का मैं रिकैप आपको करूं. ऑलवेज यूज अ preposition विद एन ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट का होना इसके बाद लाजमी है. प्लेस preposition बिफोर देयर ऑब्जेक्ट्स, मीन्स उसी के ऑब्जेक्ट के पहले हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है. यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस आफ्टर preposition, मीन्स जो भी प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं prepositions के बाद तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने चाहिए. डिफ्रेंशिएट बिटवीन prepositions to एंड infinitive to, मीन्स कब समटाइम्स हमारे पास preposition यूज़ होता है टू, समटाइम्स वो preposition नहीं infinitive होते हैं. सो ये भी आपको समझना चाहिए. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन and to. So I hope that these overall rules and regulation that I just discussed in this video would have been of a help to all of you. So if you guys have any questions, anything to ask, anything to discuss, so you can write your queries in your comment section. And one more thing, there's a like and subscribe button that is absolutely for free, right? So you can click on that anytime at all. Thank you so much. Nice to have you. We'll see you in the next one. Take care. Allah Hafiz.